स्टार्टिंग में चंडीगढ़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हूँ अभी और स्कूटर का इंतजार है। व्यू रेंटल है, सो वेदर इज़ गुड, सन है एंड आई वांट टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। इसलिए मैं नारकंडा के पास पहुँचा हूँ। नया गियर है, नए माउंट्स है, सो आई हैव टू फर्स्ट एडजस्ट विद द स्कूटर एंड न्यू रोड। इस रोड पे मैं पहले रोड ट्रिप कर चुका हूँ फ्रॉम चंडीगढ़ टू किन्नौर, पिटी, चंद्रताल लेक, स्कॉर्पियो बहुत साल पहले। स्कूटर पे फर्स्ट टाइम जाने वाला है। होता हूँ एटमॉस्फेयर इज चिल, लेट्स सी। I'm starting my journey to Narkanda, day one. First time I'm driving an Activa, new person rental, midline rentals, व्यू में एड्रेस छोड़ दूँगा। बहुत ही अच्छा सर्विस था अब तक। यहाँ पे मुझे ड्रॉप दे दिया 300 रुपये में एंड आई टेल यू द रेट्स वंस आई फिनिश ऑफ माई ट्रिप, बट नॉट मच। मैंने 14 तारीख तक बुक किया है, सब मिला के कुछ 800 किलोमीटर का मुझे 7,000 रुपये तक गिर रहा है विद पिकअप एंड ड्रॉप, विच इज़ नॉट बैड। फ्यूल मुझे भर के दे दिया उन्होंने एंड नाउ आई एम गोइंग टू नारकंडा। नाउ आई हैव जस्ट टेकन अ न्यू Insta360 माउंट एंड ऑल्सो ट्राइंग टू लोकेट द GPS। तो मेरा दूसरा फ़ोन है जिससे ये कनेक्टेड है। ऑफकोर्स अभी मुझे मालूम नहीं जब मैंने सेल्फी स्टिक लगाया तो कितना होल्ड कर पाएगा, कि नहीं किया तो आई हैव टू पुट इट डाउन, but at least now I'm trying with the selfie stick and if it holds it is fine, if not, if it's too shaky then probably I'll have to reduce the this. There is a one more small stake with this, लेकिन उसका क्या है कि बॉल जॉइंट का जो एक स्क्रू का जॉइंट आता है उसका अटैचमेंट है नहीं, so I'll have to work it out, but right now I'm just moving to Shimla and probably let's see when I reach Narkanda, और hopefully weather आज अच्छा है, बारिश ना गिरे, रेल अलर्ट ना हो and I can start this journey पर। मैं अभी निकल रहा हूँ, GPS ऑन कर दिया हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग। प्रॉबेबली यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो पता नहीं है मुझे, बस आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट होपफुली दिस इज़ द एग्जिट एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। एक फ़ोन के ऊपर GPS गूगल मैप्स ऑन है, दूसरे फ़ोन के ऊपर मैंने कुछ और कर दिया है। दूसरे फ़ोन पे आई जस्ट डिड दिस, आई डोंट नो इफ दिस इज क्लोज इनफ, आई हैव टू चेक द फ्रेम। राइट नाउ इट इज गोइंग गुड एवरीथिंग। फाइनली आई एम वे टू शिमला। मैंने स्टिक थोड़ी कम कर दी क्योंकि आई हैड स्टार्टेड विद अ लॉन्ग स्टिक बट आई वाज नॉट गेटिंग अ गुड एंगल। आई डोंट नो इफ दिस एंगल इज गुड इनफ और नॉट, बट आई विल जस्ट स्टिक विद द क्लैम्प दिस टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंटर में कैमरा रखने की आदत है, बट अब मैंने साइड में रखा है, सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शॉट्स आई एम गेटिंग, बट होपफुली इट शुड बी गुड। एंड जैसे जैसे हम शिमला की ओर जाएंगे तो रोड तो दिख ही जाएगा, सो प्रॉबेबली आई स्टिक विद दिस नाउ एंड देन प्रॉबेबली ट्राई एंड चेंज इट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि GPS भी लेना है मुझे, तो मैंने इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है। मैंने पहले सोचा था कि एप्पल वॉच से हो जाएगा, बट दिस इज द फर्स्ट जनरेशन Insta360, सो इट इज डज नॉट कनेक्ट टू माई एप्पल वॉच। तो इसमें GPS डेटा देना है तो सेलफोन से कनेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास एक एंड्रॉयड सेलफोन है जिससे मैंने इसको कनेक्ट किया है एंड होपफुली आई एम गेटिंग द GPS डेटा। अब दोनों की बैटरीज भी लो ही है, सो आई डोंट नो कि कितना देर दोनों सिंक कर पाएंगे, बट होपफुली यू नो आई माइट बी एबल टू गेट गुड डेटा। मैंने एक पावर बैंक इसके आगे डाल दिया है, सो होपफुली यू नो आई कैन चार्ज ऑन द गो। एक्स्ट्रा बैटरी भी है मेरे पास और मैं शॉर्ट वीडियोज ही मारूंगा। पुटिंग अ फ्रेश 128 GB कार्ड एंड पोस्ट प्रोसेसिंग तो वो कंप्यूटर पे ही होगी, तो प्रोरेस में करूँगा तो इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। सो आई पर्सनली फील दैट अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हैं खाली, तो एंड यू आर गोइंग टू डू इट ऑन अ कंप्यूटर और आपके पास प्रोरेस का या हाई क्वालिटी का ऑप्शन है, then I'll definitely suggest that you don't buy a very expensive X3. You can go for an X2 also if you get it at a good rate, or even an X1 just for moto vlogging। हाँ, अगर आपको वो cool shots लेने हैं उसके लिए ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि डेप्रिकेटेड मॉडल है, बट अगर ओनली इफ यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ लाइक यू नो आपको खाली व्लॉग करना है, रास्ते के ऊपर बातचीत करनी है, सो आई थिंक सो इट हैज गॉट अ गुड माइक, ऑमनी डायरेक्शनल माइक बिल्ड रिडक्शन है। और अभी AI सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिससे आप आपका वॉइस को यू कैन मॉड्यूलेट इट प्रीटी वेल। सो आई पर्सनली फील दैट if you can do that well,
then you can use these artificial intelligence tools where you can get a good audio and you can get a good video. So now this is a very different terrain for me. As you can see, I am on a highway, and mostly when I go from Dharamshala, I am mostly on the hilly road, जिसमें छोटे रास्ते होते हैं. तो एक बहुत बड़ा हाईवे है और मे बी पंजाब शिमला चंडीगढ़ शिमला मनाली हाईवे. So यहाँ पे टर्बुलेंस बहुत होने वाला है, and hopefully the road till Narkanda is good, and I reach Shimla within 4 to 5 hours. In front of me, there is coming a left towards Delhi, Ambala and Patiala. So I think so मुझे वही रास्ता लेना पड़ेगा Ambala का, and probably that might be the way to go. So let me see Google Map पर. अभी मुझे कुछ पता नहीं रहा है, but hopefully that is the way. I don't know what happened to the navigation, but probably this is the way. I'll still check it and see if it is right, because I don't know why this Google Map is not connected. So भी लगा दिया. मैं एक्चुअली मैपल्स का मैप यूज़ करने वाला था नाथकंडा जाने के लिए. आई कुड यूज दोस मैप्स. मैप माई इंडिया का इंडिजिनियस मैप्स है विच आर इन कंटेंशन विद गूगल मैप्स, बट they're listening because I'm not getting any kind of haptic feedback also. So now I am on the Chandigarh Shimla highway. I have gone through a lot of. So here everybody's in a hurry. Finally, I got sugarcane juice. गन्ने का रस मिला, बहुत रिफ्रेशिंग था. और अब मैं I'm on the highway. I've just shut off the GPS because it was too much. Like getting putting on a headphone, then getting into so बहुत सारे gadgets हैं. So workout नहीं हो रहा है थोड़ा, but I'm trying my best to do whatever I could. तो लगता है कि 90 किलोमीटर्स है यहाँ से शिमला. और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ के पंजाब हरियाणा के ड्राइवर्स को मतलब इट्स लाइक इट्स अ लेसन इन इटसेल्फ. पंजाब ड्राइवर्स हाउ एग्जैक्टली दे ड्राइव एंड हाउ क्रॉस. यहाँ पे पता भी नहीं चलता कभी कभार कि जब पुलिस इज क्रॉसिंग वेदर दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू. So I have been so used to driving in Himachal and Uttarakhand, such nice people, safe places to drive, no tension at all. So when I go to some other states, like sometimes I don't know how exactly the law and order works there. So I try to keep to the national highways most of the times, and hopefully this road will be good. Of course, in every clip I won't be having the GPS because I have to connect it with my phone, and the camera I have to got me, or sometimes because I have got like a 128 GB fast SD card, sometimes the card causes issue with this camera. I'm still not giving up on it because it's still a very sturdy camera. It's giving me very nice footage, and hopefully it would survive the distance. If not, if it breaks down, I'll at least be happy that I could get the most out of my investment. It's one of the first cameras, and I had a lot of fun with 1X. I'm just using it now after the photo long, and probably if I want to capture more kind of a contrast, then probably I'll use the X3. The X3 has got nice contrast in terms of, but this is a very flat image, as you can see, very hot, nothing much to do. Just like traveling, and hopefully I can gather some nice views as we go up the hill. Finally, now I am approaching the
hilly regions. As you can see, the incline has started. You can see on my right side, that's the Parwano area, which is the border of Himachal, basically, and whatever you can call Punjab or Haryana, Chandigarh, because it is the capital of probably Haryana. And now I'm moving slowly up the hills, and I can see some overcast heavy weather up there. So hopefully by the time I reach, it won't be raining. It could be foggy a lot, and finally the hills are approaching. As you can see, I'm moving up, and I hope that Mahadeva blesses, and I reach Tanglik without any problems on the road, complete. And I don't mind a little bit of bad weather when I'm coming back, but when I'm going, I probably would like not a wet weather. And this is my third Kailash, and I can hope it goes seamlessly well. Of course, no trip of Mahadeva is easy right from the start. Like, I was not even supposed to be here. I was supposed to come on this trip on the 25th, but suddenly I got information that no one is allowed after 10th of September, so I had to rapidly change my plans, and here I am, 4th of September, did not check the weather, did not check anything, going in blind, and hopefully I can get some good weather, good ride. Still a long way to go. Maybe I'll reach Narkanda by 8 in the night. 5 hours more to go, and I hope the weather holds up. So I'm trying a new angle now with this. Hopefully, ये stable रहे तो अच्छा है. I don't hope it doesn't fall down, because it is a very stable route I'm getting this angle. Crossing Parwano, I just crossed the checkpost. Sorry, I could not capture it because battery खत्म हो गई थी and I had to do some on the go errands. So पहला दिन है तो थोड़ा mismatch हो ही जाता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहा I do this photo vlogging once a year. So sometimes you just are not. But still, I'm giving you a good view of the road. जैसे आपको दिख रहा है अभी जैसे परवानो है रास्ता शिमला तक जा रहे हैं हम Solan is first stop, फिर कसौली आएगा यहाँ से, and कसौली is a cantonment area. मैं कोई I'm going to some nice place. जैसे आप देख रहे हैं, it's a very good place. McDonald's है और really, but not really have McDonald's. But nice place, नीचे मैंने lot of things देखा. रास्ते बड़े खराब हो चुके हैं बारिश की वजह से. It was very heavy rains. It was a natural disaster here. It's a nationwide disaster. महादेव का बुलावा है तो जाना तो पड़ता है. Loss of transport
ट्रांसपोर्ट, ये स्टेट का लाइफ लाइन है ट्रांसपोर्ट है। और लोअर हिमालयस, स्टिल वी आर नॉट इन द अपर हिमालयस। यही फायदा होता है बाइक का कि कहीं से भी निकल सकते हैं। गाड़ियाँ होती थी तो आपको पता हुआ होता था अबाउट ये जो आपको यहाँ से लैंडस्लाइड दिख रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं उसके बारे में। So get a bird's eye view of the beautiful Chandigarh Shimla highway, picturesque drive। लैंडस्लाइड नहीं होते तो ये सब कटाई नहीं होती तो hopefully it would have been much more picturesque, but sometimes you have to be once in nature to actually. So now I am moving from Parwan, I think से कसौली। फ्यूल भरा दिया मैंने, फ्यूल ऐसा लग तो रहा है फ्यूल हो गया, पता नहीं इसका कितने का भरा है, 240 का भरा है, but just got fueled up at 240 and trying some new angles and अभी थोड़ा मैंने सेल्फी स्टिक और एक्सटेंड किया है, so probably you'll get a better perspective। I have to go really very slow so that we don't bang into some guy, but this always like just on it now, but still I hope it will be a right perspective and I'm enjoying this ride for the first time। I'm doing very slow, आराम से जा रहा हूँ, रास्ता भी अच्छा है, probably not bad। if next time I have to come to Himachal, probably I'll also Chandigarh क्योंकि the service was very professional। DKA gave me a nice scooter, ये 2022 की स्कूटर है, registration license, full insurance paid है, और pick up and drop service with is it's not bad and scooter is very nice। Secondly, मेरा सबसे बड़ा importance था कि I got this backloading scooter, so both people in Himachal, Chandigarh में ये and this very nice professional scooter I really love working with youngsters। So he is a youngster और मैं इनका really देखूँगा please से scooter rental लीजिए। The first impressions are really nice। उन्होंने मेरे लिए 3 helmets लाए थे, let me try it out, gave me a complete overview। Secondly, सबसे बड़ा चीज़ है उन्होंने मेरे को कार के अंदर वो पाना भी दिया है। This is Kasoli, from the left you have to go। मैं गया था कसौली कैंटोनमेंट एरिया, मे बी while running I might look and first time actually I mistook it for Kausali from Uttarakhand to the 942 love story। वहाँ पे शूट हो गया। जब मैं फर्स्ट टाइम हिमाचल आया तो मुझे लगा कौसानी और कसौली सेम, सो I took all the way from the bus from Shimla and it was not a good experience क्योंकि वो HPCC की बस थी और एज यू नो आप जब लास्ट सीट पे बैठते हो तो आपको खिड़की बंद करके बैठना है वरना यू विल बी ड्रेंच्ड इन वॉमिट। Probably इसके लिए मुझे वायरलेस माइक लगेगा। I don't know how good the audio is, but I'm shouting at the top of my voice and with some little enhancement I think so the audio would be decent enough। Beautiful place, nice ride, evening। मैंने ये ग्लासेस डाले, मुझे थोड़ा पोलराइज इफेक्ट मिल रहा है, but I'm sure बाहर धूप कड़क रहेगी जैसे अब सन दिख रहा है। उसकी बैटरी जल्दी खत्म होती है तो मैंने पावर बैंक के साथ बैटरी को चार्ज करने रख दिया क्योंकि ऑन द गो तो इसे अभी नहीं कर पाऊंगा, सो थोड़ा ऊपर पे चलना पड़ेगा। बट दैट गिव्स मी अ ब्रेक टू ऑल्सो एक्सप्लोर दिस एरियाज। ये यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है जो कलका से शिमला के लिए ट्रेन जाती है, नैरो गेज बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं। तो दिस इज धर्मपुर स्टेशन और एक लोगों ने लाइफ में एक बार ट्रेन करनी चाहिए और इट टेक्स 5-6 आवर्स, इट्स अ वेरी स्लो ट्रेन। चंपा वैली जाना है तो दर्शन महादेव, चंपा वैली जाना है तो मुझे धर्मशाला से जाना है। वैसे फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ आई गो फ्रॉम चंडीगढ़ इट इज नॉट लाइक अ बिग डील। पूरा चंबा तक तो चंडीगढ़ से भी चली जाती है गाड़ी because the roads are very wide। So I do my answer। The benefit of coming to Chandigarh is that I have a direct flight और धर्मशाला जाने के लिए मुझे आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज आई हैव टू गो टू दिल्ली,
टाइम दिल्ली से उसके एयरपोर्ट पे रात को रुकना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की धर्मशाला होती है, बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल हो जाते हैं. So it's all and all two flights, messy, especially in such kind of terrain. Passing to the town of Solan. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बाईपास नया है, क्योंकि मैं रास्ते में ऑलमोस्ट आई एम कमिंग आफ्टर 20 years. There was a road which went close by the railway station, and I think that is above the hills. This is some new road which have been constructed. I don't know. ये सब चीजें एकदम ही नहीं लग रही है मुझे. कसौली तक तो ठीक था, लेकिन अभी तक मुझे कोई रेलवे स्टेशन दिखाई नहीं है. एनीवेज, सी सोलन थोड़ा सा ओवरकास्ट है अभी. लग रहा है मुझे शिमला जाते जाते बारिश हो सकती है, टू साइन लाइक साइन अप फॉर ओवरकास्ट रहा तो अच्छा ही है, क्योंकि जैसे मेरा मानना है कि ये जो 360 कैमरा है, हम थोड़ा ओवरकास्ट लाइट्स करते हैं तो डायनेमिक रेंज अच्छा हो जाता है. जैसे शैडोज और हाईलाइट्स आर लाइक सेम. This will be a big video because I'm going to Solan town. Maybe Shimla यहाँ से 47 किलोमीटर जाना. Outskirts of Solan. Now I am almost like 20-25 kilometers from Shimla, और आप देख रहे हैं कि जैसे मैं एलिवेशन देख कर रहा हूँ, मौसम is becoming like it's very overcast. Andhra area है, it's almost like near to Shimla. These little patches have been off, but I think they are because of this torrential rains what Himachal has experienced. Else, really good. It's मैं almost 30 kilometers from Shimla से. And you can see this is the old road now. ये widened road नहीं है, ये ओरिजिनल रास्ता है शिमला का, जो शायद अभी
But still not become like a main part of it. Maybe they are going to bypass it. They don't probably they're going to bypass it by I don't know. But right now, they can this raw intake Shimla road. Last long. But yeah, you got first-hand view of biking. It is beautiful, beautiful road. Amazing, amazing drive here. Look at this. I'm getting a bird's eye view here. मेरे कैमरा का एंगल अभी ऐसा दिया कि शायद आपको पूरी स्क्रीन दिखती होगी. Along with me. Dark spot here, so it might result very soon. I don't want to get drivers. यही तो राय GPS पे मैंने इसमें डाल दिया है तो शिमला आ ही गए. This is Baluganj. So this is the boundary of Shimla. So it's not like Shimla town must be like 10 kilometers. जैसे आप देख रहे हैं already getting dark and I don't know Shimla is still 12 kilometers from now. Narmada is 74 from here, so probably रात को 8 बजे दर्शन का सकता है. इतना अच्छा आएगा नहीं है. आ गया था हमारे इतना पड़ता है जैसे रियली वेरी केयरफुल. राइट को पता भी नहीं चलेगा. Clouds are looking ominous. Aurora is processing strong. शिमला और अभी बारिश हो रही है एंड आई वांट टू गो टू नारकंडा. मे बी शायद थोड़ी कम हो जाए बारिश. आई एम प्लानिंग टू गो लिटिल बिट अहेड.
Let's see how this gear holds up. Finally going to Shimla. बीच में बहुत बारिश आ गई थी. Hopefully I bypass Shimla and मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ. मेरा भी होते जा रहा है. So I don't know how much time I have a ride. मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ. And मैडम नारकंडा का रास्ता कौन सा? नारकंडा. झारखंड अभी ऑलमोस्ट लाइट फॉल हो रही है मेरी. एंड नंबर वे तो मारकंडा जैसे आपने देखा स्कूटी के फायदे स्कूटी होती है तो नीचे पड़ा होता है. फाइनली मूविंग ऑन. फ्री आप देखते हैं इससे
layers काफी अच्छे solid light is falling पे आपको let's इसके पूरा detail ठंड पड़ने वाली है भैया बहुत ठंड लगने वाली है अभी। So these are the final views I think so for today and hopefully इसके बाद ठंडा ही मिलेंगे आपको। So finally it is evening and the final lights. So I'm going to Salonjali और मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि नाइट शॉट मारने की बिकॉज ऑफ द कितना आसान पड़ता है जस्ट ट्रैवल्स थ्रू roads of traffic. As you can see, it is like very difficult. It only because of the shortcut, but I don't know